welcome to the third episode from Lakshadweep. Well, this one is going to be a little different than the first two episodes. तो आई होप आपने पहले दो एपिसोड देखे हो और आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो. जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में आई एम इन लक्षद्वीप में अगाती आइलैंड में बैठी हुई हूँ, जो आपने सेकेंड एपिसोड में देखा होगा. इफ़ यू स्टिल हैवंट वॉच द एपिसोड, what have you guys been doing? दोनों episodes के links are in the description box of this video, so please go watch that. बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से बनाया मैंने. And one of the most beautiful destinations I've visited in India so far. This Union Territory is beyond my expectations. It's beyond real. अगर कोई भी जगह है इंडिया में जो मालदीव से सबसे क्लोजेस्ट है, इवन एक्चुअली प्रॉक्सिमिटी वाइज एंड इवन अदरवाइज ब्यूटी वाइज, तो वो यही है लक्षद्वीप. एनीवे, द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे इस ट्रिप पे. वो मुझे आपके साथ शेयर करना था, बिकॉज लाइक आई केप्ट ऑन सेइंग इन द फर्स्ट टू एपिसोड्स ऑल्सो, लक्षद्वीप आना इज़ नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक. आप कोई भी दूसरे इंडियन स्टेट की तरह यहाँ पे सिर्फ एक एयर टिकट निकाल के रातों रात आ नहीं सकते. काफ़ी सारे परमिशंस वगैरह लगते हैं टू बी एबल टू कम ऑन द आइलैंड, स्टे ऑन द आइलैंड, ट्रैवल ऑन द आइलैंड. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपका जो सफ़र हो, आपका ट्रैवल हो, बहुत ही सीमलेस और ईजी हो जाए. एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू एक्सपीरियंस दिस पीस ऑफ हेवन दैट वी हैव कॉल्ड एज लक्षद्वीप. बट टू कम हियर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ टास्क, सो that's why I'm here to simplify things for you and to make it very easy. So इस वीडियो में I'm going to be covering things like how to get to Lakshadweep in the first place, which is the most important thing. Where you can stay if you come to Lakshadweep, what are the different islands, can you stay at all the islands, what is the duration you can stay, the food, the things that you can do in Lakshadweep and everything. So this is basically going to be your Bible to coming to Lakshadweep. So stay tuned till the end of the video, and of course I'm also going to tell you a little bit about the costing and the budget of your trip to Lakshadweep. Alright, so first things first कि लक्षद्वीप आया कैसे जाता है. लक्षद्वीप इंडिया में ही है. इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस आइलैंड्स दैट यू विल एक्सपीरियंस. लक्षद्वीप आने के लिए दो तरीके हैं. वन इज़ ऑब्वियसली बाय फ्लाइट एंड द सेकेंड वन इज़ बाय शिप. बट शिप से आने के लिए अगेन देर इज़ अ होल लॉन्ग प्रोसीजर. यू नीड टू अप्लाई फॉर वेरियस परमिट्स एंड शिप पे आना सबके लिए अलाउड नहीं है. ऑल्सो इट ऑब्वियसली टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम फ्रॉम एनी अदर इंडियन state. So the best way to come to Lakshadweep is to come by flight. और यहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है जो अगाती में है, जहाँ पे मैं अभी हूँ. तो अगाती में इनका एक एरोड्रोम है, there is an airport, और this airport is literally a whole experience in itself. मतलब can you imagine an airport being an experience in itself? The reason I'm saying this is because look at this. So this is the landing strip of the Agati airport. एक बहुत ही छोटा सा सिंगल लैंडिंग स्ट्रिप है और यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लाइट जाती है जो एयर इंडिया की फ्लाइट है. एक 42 सीटर छोटी सी फ्लाइट होती है एंड दैट्स द ओनली वन दैट फ्लाइज टू अगाती एंड इट इज़ सच एन एक्सपीरियंस बिकॉज व्हेन यू आर अबाउट टू लैंड इनटू अगाती द व्यूज will just blow your mind away. The views are so beautiful. ऐसा लगता है कि आप लिटरली पानी के अंदर उतरने वाले हो because it's crystal clear turquoise water surrounding all around the airport. तो इस एक स्ट्रिप के अराउंड दोनों साइड पे आपको लगून और ओशन भी मिलेगा. So it's beautiful, it's blue, it's green, it's all kinds of amazing that you can think of, and it's the only airport in all of India which is an island airport. Also, it is the tiniest airport in all of India, so that makes it an experience in itself. तो आप इंडिया की कोई भी सिटी से एक फ़्लाइट ले सकते हो अगाती एयरपोर्ट. मैं आई थी मुंबई से, तो मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी टू अगाती. तो आई हैड टू टेक अ फ्लाइट टू कोची एंड कोची इज़ द क्लोजेस्ट स्टेट इन इंडिया फ्रॉम द लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो मैंने आई थी मुंबई से कोची और फिर कोची से आई केम टू अगाती. Okay, so now that you come to Lakshadweep, where to stay? Well, Lakshadweep में बहुत सारे islands हैं. And when I say where to stay, मैं फ़िलहाल accommodation की बात नहीं कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ कौन से island पे आप रह सकते हो. Because you first need to fly down to Lakshadweep and then you need to narrow down the island that you're going to be staying at, and then you need to narrow down the stay that you're going to be staying at. So Lakshadweep में
टोटली अगर आप देखो तो देयर आर 36 डिफरेंट आइलैंड्स, और इनमें से सिर्फ 10 ऐसे आइलैंड्स हैं जो इनहैबिटेड हैं, जहाँ पे इनके जो लोकल्स हैं ये लोग रहते हैं। एंड उसमें से भी देयर आर ओनली फ्यू, नेमली 4 to 6 आइलैंड्स जहाँ पे टूरिस्ट को अलाउड है जाना। एंड दिस, कीप इन माइंड, इज फॉर इंडियन टूरिस्ट। फॉर फॉरेनर्स, फॉर पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ इंडिया, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। But currently I'm addressing this for Indians. So as an Indian citizen, if you want to come to the Lakshadweep, you have to first decide कि आप कौन से आइलैंड पे रहना चाहते हो, क्योंकि हर एक आइलैंड का एक अलग पैकेज होता है। सो इफ़ यू कम विद गवर्नमेंट पैकेजेस, देयर आर डिफरेंट पैकेजेस। जैसे कि मैं आई थी थ्रू अ स्पोर्ट्स पैकेज। ना स्पोर्ट्स पैकेज इज़ बेसिकली फॉर द कवराती आइलैंड। तो कुछ चंद ऐसे आइलैंड्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, जो टूरिस्ट के लिए उन्होंने ओपन रखे हैं। जैसे कवराती आइलैंड हो गया, जहाँ मैं रही थी, दैट यू मस्ट हैव सीन इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। फिर ये हो गया अगाती आइलैंड। फिर देर इज़ बंगाराम आइलैंड विच इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। देन देर इज़ मिनीकॉय आइलैंड विच इज़ द क्लोजेस्ट टू मालदीव्स। तो ये कुछ चंद ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे उन्होंने ओपन रखा है फॉर इंडियन टूरिस्ट्स टू गो एंड विजिट, जहाँ पे आप ओवरनाइट रह सकते हो। द होल डील अबाउट बीइंग एबल टू विजिट एनी ऑफ दीज आइलैंड्स इज़ द स्टे। द रीज़न कि इतने सारे परमिट्स और इतने सारे परमिशंस लेने पड़ते टू कम टू लक्षद्वीप इज़ क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसोर्ट्स नहीं बनाए हैं। हर एक आइलैंड पे एक सिंगल रिसोर्ट है, गवर्नमेंट ओन्ड रिसोर्ट। एंड इनकी कैपेसिटी भी होती है लाइक 4 rooms, 5 rooms, एट मैक्स 18 rooms और 16 rooms. सो अगर उन्होंने इतने सारे लोगों को आने दिया लक्षद्वीप में, then where are these people going to stay, right? So this is the reason कि वो बहुत ही मतलब चंद लोगों को एक टाइम पे आने देते हैं. You can go to their government website and you can register over there. वहाँ पे अलग अलग पैकेजेस होते हैं, आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा पैकेज है, और उस आइलैंड पे उस रिसोर्ट की अवेलेबिलिटी के बेसिस के ऊपर आपको आने मिलेगा या नहीं आने मिलेगा. गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, मुझे जाना था बंगारम इस ट्रिप पे, क्योंकि बंगारम एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, बहुत ही टूरिस्टी आइलैंड है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी आइलैंड्स जहाँ पे इंडियंस जाते हैं. बट द रीज़न आई कुड नॉट विजिट देयर इज़ क्योंकि मेरे डेट्स के दौरान वहाँ पे जो रिसोर्ट है उसके सारे स्टे के मतलब द रूम्स वर फुल. इट वॉज करंटली रनिंग फुल अप एंड दैट्स द रीज़न आई कुड नॉट गो. सो अनलेस एंड until you don't have a confirmed a confirmation letter of your stay, of like your the number of days you're going to stay, and a confirmation from the hotel saying कि ये हमारे साथ रहने वाले, तब तक आपको उस आइलैंड पे एंट्री नहीं मिल सकती. तो आपकी जो स्टे की बुकिंग है ये पहले कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, having said all of this, this can be a little bit overwhelming for you if you are planning a trip individually to Lakshadweep. कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अप्लाई करें परमिशन के लिए, कैसे पता चलेगा कि होटल अवेलेबल है कि नहीं है. I'll just simplify it for you. The easiest way to do this is like me. तो एक कंपनी है, कोची बेस्ड कंपनी, जिसका नाम है GoL Travels. It's called as GoL Lakshadweep, shortened to GoL Travels. तो मैं उनके साथ ट्रैवल कर रही हूँ. So basically what GoL Travels does is they manage all of this with you, your permits, which package you can choose etc. तो वो चॉइस देंगे ऑब्वियसली, एंड वो आपको बताएंगे कि ये पैकेजेस है, इसमें से आपको कौन सा करना है, आप कर सकते हो etc. एंड दे विल गेट यू द होटल, दे विल गेट एवरीथिंग सॉर्टेड. सो यू डोंट हैव टू कीप रनिंग अराउंड फॉर थिंग्स ऑन योर ओन. मुझे सिर्फ एक चीज़ के लिए खुद करना था, दैट इज़ गेटिंग अ पुलिस परमिट, विच आई गेट टू द डॉक्यूमेंट्स लिस्ट इन अ बिट. सो ट्रैवलिंग थ्रू GoL Travels कैन मेक लाइफ वेरी वेरी ईजी बाई डूइंग दिस. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. उनका जो वेबसाइट है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, तो आप उसी में देख सकते हो कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको उनको रीच आउट करना है. ऑल्सो उनका इंस्टाग्राम का पेज है जिसका हैंडल भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो गो एंड चेक आउट. उसमें से भी यू कैन रीच आउट टू देम. दे आर वेरी क्विक टू रिप्लाई टू एनी क्वेरीज दैट यू गाइज मे हैव. सो आई फील कि somebody who has already traveled to the Lakshadweep, आने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, फैमिलीज आए हुए जो अपने खुद से आए थे, और मैं आई थी GoL के साथ. तो जब हम ऐसे ही बात कर रहे थे वगैरह, तो इट सीम्ड लाइक कमिंग थ्रू GoL Travels was so much better, was such a good decision, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस चीज़ें करनी मिली, और बहुत सारे चीज़ें ऐसी सॉर्टेड आउट थी मेरे लिए जो मुझे ढूंढना नहीं पड़ा या मुझे रुकना नहीं पड़ा. आई डिडंट हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन टू आस्क एंड ऑल, एज कम्पेयर टू अदर्स हु हैड कम बाय देमसेल्व्स. तो उनका बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते थे या ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए थे. देयर वर पीपल हु हैड पेड सो मच एंड हु हैड कम एंड दे कुड ओनली स्टे लाइक वन नाइट, क्योंकि उससे ज़्यादा उनको परमिशन नहीं मिला था. सो आई थिंक ट्रैवलिंग विद GoL Travels कैन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑल ऑफ दैट आउट फॉर यू.
coming to the list of documents that you will need to come to the Lakshadweep Islands, mainly तो जैसे अगर आप GoL Travels के साथ आ रहे हैं तो the only thing you will require from your end is a police certificate, police clearance certificate जो होता है जहाँ पे पुलिस आपके मतलब आपके स्टेट के पुलिस स्टेशन के लेटर में स्टेटेड है कि you have no criminal records against yourself and so on. It's just a police clearance certificate, a very basic one that you can get at your nearest police station. आप ऑनलाइन भी कर सकते हो. I am from Mumbai, तो मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट वेबसाइट पे अप्लाई किया था and then I had to go to the police station for like a verification. I got the signature from the inspector of the area that I was living in and I just got that quickly. So that got sorted and उसके बाद I was able to come here. But please bear in mind कि ये जो पुलिस सर्टिफिकेट का पूरा प्रोसेस है, this can take a while. Like for example, for somebody like me, so it differs state-wise. Somebody came from Rajasthan, for her it was much easier. But for me, since I came from Maharashtra, मेरा पुलिस सर्टिफिकेट के लिए मैंने अप्लाई किया था लाइक 1.5 महीने पहले. So it was a very long process for the simple reason कि उनका जो वेबसाइट है that is like a government website, and if you all have used a government website like for your passport renewal or anything, then you will know कि उसमें बहुत टाइम लगता है. Like there are a number of documents you have to upload on that. मतलब basic वाले documents, your Aadhaar, your PAN card, stuff like your passport copy and all of that, but everything has to be a certain size, everything has to be a certain format. So once you go on the website you'll be able to check, but this is for the Maharashtra government website. It could be different from your state if you're not from Maharashtra, but either way अगर आप plan कर रहे हो तो please pre-plan everything. Lakshadweep is one place you need to pre-plan pretty much in advance. आप उठ के नहीं बोल सकते कि मुझे अगले हफ्ते जाना है या 2 हफ्तों में जाना है. At least keep like a month's buffer, thinking कि you have a number of permits etc. to fall in place and only then will you be able to travel. So अगर आप छुट्टियाँ वगैरह स्पेशली ले रहे हो ऑफिस से तो प्लीज़ प्लान मच इन एडवांस. Now coming to the list of documents, like I said कि मुझे सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगी थी, बाकी के जो भी परमिट्स थे तो परमिट्स यहाँ पे ये लगते हैं. एक तो होता है एक लोकल का परमिट लगता है यहाँ पे आने के लिए. तो somebody who is a local at Lakshadweep needs to give you a letter stating कि you are coming to visit the island and they are okay with that. So unless and until you have that, you can't really come. And these are permits which are checked जब आप जेटी बोर्ड कर रहे होते हो या फिर आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड शायद जा रहे हो. जैसे कि मैं जब कवराती आइलैंड में एंट्री कर रही थी तो मुझे एक परमिट गोल ट्रैवल्स ने ऑलरेडी दे दी थी जहाँ पे लक्षद्वीप के गवर्नमेंट ने लिखा हुआ था कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट जीनल इनामदार इज गोइंग टू बी स्टेइंग एट कवराती and it was stated at Kavarati, so I can only be there for 3 days. And that's what I had to show when I entered Kavarati, like at the jetty. Kavarati के लिए जाने के पहले तो जेटी पॉइंट पे जब आप शिफ्ट होने वाले हो या आप एक आइलैंड की तरफ जाने वाले हो वहाँ पे आपको ये परमिट दिखानी पड़ेगी. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स. आधार कार्ड बेसिक है, आधार कार्ड आप अपने साथ कैरी कर लीजिए. अगर पॉसिबल हो तो अपने घर से ही 2 फोटोकॉपीज़ लेके रखना सो दैट आपको यहाँ नहीं ढूंढना पड़े. मैं इनके साथ आई हूँ तो मेरे लिए थोड़ा ईजी था क्योंकि इनको पता था लोकल्स, तो दे टुक मी टू द प्रिंटिंग शॉप एंड दे गॉट माई आधार कार्ड प्रिंटेड एंड ऑल दैट वी रिक्वायर्ड टुडे. बट अदर देन दैट आप घर से करके आओ तो इट विल बी ईजी. Coming to another very important thing that I like to address, and as a content creator I feel like this has to be addressed. Network. Getting mobile network in Lakshadweep is a pain. Please forget network जितने दिन के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो. तो जब मैं आई थी इसके पहले मैंने थोड़ी पूछताछ की थी अराउंड एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई गॉट टू नो कि BSNL और एयरटेल यहाँ पे अच्छे से चलता है. तो आई नेवर न्यू कि अच्छे से चलता है का मतलब होता है कि फ़ोन का नेटवर्क चलेगा, मतलब कॉल्स लग पाते हैं, वो भी कुछ कुछ जगहों में. I have an Airtel SIM, तो BSNL का I have no idea. I think the locals here use BSNL so they get it, but I have an Airtel SIM card and phone calls कुछ जगह पे लग पा रहे थे because bleak signal आ रहा है. But when it comes to data, 4G लिखा हुआ आ रहा था, but there's absolutely no data. Like there is absolutely no data. And for somebody like me who has to like post on the go, have to keep posting Instagram stories, or like check emails, or there's some work which is always happening. मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ पिछले 4 दिन से. And stories भी मैंने जो डाले हैं, literally मैंने कैसे डाले मुझे पता है. I've taken people's hotspots and I've just it's been a big ride. So just to let you know कि if you come, don't come with a mindset of like working out of Lakshadweep. That's not going to be possible because if you need मतलब बेसिक चीज़ें like sending basic WhatsApp messages वगैरह हो जाता है, थोड़ा बहुत calls लग जाते हैं थोड़े बहुत. But if you have to download stuff, if you have to upload stuff, if you have to like have like heavy files transferred and all,
प्लीज़ फॉरगेट अबाउट दैट, वो नहीं हो पाएगा. तो अगर आपको लक्षद्वीप में काम करना है, इट्स अ वेरी गॉर्जियस प्लेस टू वर्क आउट ऑफ, बट अनफॉर्चुनेटली यू वोंट बी एबल टू बिकॉज द डेटा डज नॉट सपोर्ट दैट. एनीवे, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो आई फील लाइक यहाँ पे डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही मतलब एप्ट जगह है, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है आपको मन नहीं करेगा आप फोन के अंदर देखो. तो मैक्सिमम यू विल बी यूजिंग योर फोन इज टू टेक फोटोज ऑफ द प्लेस, बट अदर देन दैट आपको नहीं लगेगा कि यार मैं फ़ोन करूँ या फ़ोन पे रहूँ या काम करूँ. मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करेगा. मेरा तो खैर काम ही ये है कि मैं शूट करूँ, इसलिए इट्स डिफरेंट. बट इफ़ यू आर in another field of work, then you will literally not feel like working when you're here because it's so gorgeous all around. You will just want to spend this time to immerse in this place. Another very important thing I want to address about Lakshadweep is ट्रैवलिंग सोलो. आई थिंक एक सोलो ट्रैवलर के लिए ये बहुत ही एप्ट लोकेशन है इंडिया में. ये मैंने कहा था जब मैं पौंडीचेरी भी गई थी, वहाँ पे भी आई फेल्ट लाइक फॉर अ सोलो ट्रैवलर, एंड इररिगार्डलेस वेदर यू आर अ लेडी और अ मैन और व्हाटएवर, जस्ट इन जनरल फॉर सोलो ट्रैवलिंग लक्षद्वीप इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस. Now as a woman traveler I also feel that it is very 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 safe. तो लक्षद्वीप का मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देती हूँ. लक्षद्वीप बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है और यहाँ पे कुछ लोकल्स रहते हैं. सारे आइलैंड्स पे एक्चुअली लोकल्स रहते हैं. तो जो लोकल्स है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है. दे वेरी वार्म एंड नॉट नेसेसरीली दे वोंट कम एंड दे विल टॉक टू यू और स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, बट दे इवन इफ दे सी यू यू विल बी वेरी इजीली रिकग्नाइज एज अ टूरिस्ट बिकॉज we just seem very different from the locals over here. तो समझ में आ जाता है कि ये लोकल है, ये टूरिस्ट है. तो कोई भी लोकल एक टूरिस्ट को अगर देख लेना तो दे विल जस्ट स्माइल और दे विल जस्ट से हेलो और दे विल जस्ट से वेलकम, जस्ट एज अ जेस्चर. एंड आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस दिस एवरीवेयर इन लक्षद्वीप. मैं पिछले 4 दिन से हूँ एंड एवरीवेयर आई वाज गोइंग देयर वर मेन, देयर वर वुमेन, देयर वर चिल्ड्रन, दे वुड जस्ट स्माइल एंड लाइक हेलो, so that gives you a very warm sort of feeling that you feel very welcomed, you don't feel out of place. Also another thing is that the island is completely Muslim population यहाँ पे है. Islam is what is heavily followed, so you won't find any other religions. But having said all of that, I would want to request you कि you dress a little appropriately, not only because there is Muslim population or anything like that, but for the simple fact कि यहाँ पे locals रहते हैं and it could be a little odd for the locals to kind of because ये उनका घर है, वो यहाँ पे रोज़ निकलते हैं, they do their daily chores, they do their daily activities, they come for fishing, they come to the beach with their children and so on. So if you're dressed a little inappropriately, it can get a little awkward for everybody actually, even for them, for yourself also. So I've been very conservative in the way I've dressed, स्पेशली ऑन द बीचेस एंड सो ऑन. मैंने उन्हीं जगहों पे स्विमवेयर वगैरह पहना है जहाँ पे आई फेल्ट लाइक ओके यहाँ पे मुझे कुछ शॉट्स लेके निकलना है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी टू मेनी पीपल एंड सो ऑन, ओनली बिकॉज आई वॉज हियर टू क्रिएट कॉन्टेंट, दैट्स द ओनली रीजन. बट अदरवाइज नॉट नेसेसरीली हैव टू वेयर completely covered clothes, but what I mean is just dress a little decently, dress a little conservatively, because just so that you don't make it awkward. Nobody out here is going to come and point out at you and tell you don't or whatever. People are really really sweet, people are very warm, but just as a matter of respect is what I wanted to bring to your notice. Lakshadweep is best visited all year round. It's a year round destination, but the only thing that I would like to say is कि अगर आप मानसून के टाइम पे यहाँ पे आए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आउटडोर्स सबसे ज़्यादा एंजॉय करो, और अगर आप आउटडोर ज़्यादा निकल ही नहीं पा रहे हो बारिश की वजह से तो दैट वुड बी अ कंप्लीट फेल राइट टू कम. तो आई फील कि मानसून को आप स्किप कर सकते हो. मानसून को छोड़ के एनी ऑफ द टाइम इज गुड. नाउ द समर्स आर रियली हार्श. ओके, हैविंग सेड दैट समर इज ऑल्सो गुड टाइम, क्योंकि सनलाइट इतनी अच्छी होती है. तो अगर आप स्कूबा डाइविंग जैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो द लाइटिंग कंडीशंस आर द best for you to be able to kind of see the underwater marine life. But other than that, the winters are the best time to come. Between November and February would be the most apt time to come. शाम के टाइम पे ठंड हो जाती है, early mornings भी काफ़ी ठंड होती है, and throughout the day it's quite pleasant. So I think the winter months in general, like your November to February, would be the best time to visit Lakshadweep. Now coming to staying on the island,
जैसे कि मैंने कहा कि हर एक आइलैंड पे एक गवर्नमेंट रिसोर्ट बना हुआ है, तो मैं गोल ट्रैवल्स के साथ आई थी, तो मेरा पूरा स्टे उन्होंने सॉर्ट आउट किया था। जब मैं कवराती में थी तो वहाँ पे भी एक रिसोर्ट है जो उन्होंने अरेंज करके दिया था। आज मैं अगाती में हूँ तो यहाँ पे भी उनकी गवर्नमेंट रिसोर्ट है। तो ये जो है बुकिंग अगर आप गोल के साथ करो तो वही सॉर्ट आउट कर देंगे, बट अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो तो आप जब गवर्नमेंट वेबसाइट पे बुकिंग कर रहे हो वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी ऑफ द होटल्स एंड द रिसोर्ट, एंड मेनली आपको खाली उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि वो अवेलेबल है कि नहीं आपके डेट्स के टाइम पे। इफ़ दे आर अवेलेबल देन वेल एंड गुड, तो आप फिर उस आइलैंड पे विजिट कर सकते हो। इफ़ नॉट यू माइट हैव टू अनफॉर्चुनेटली शिफ्ट योर डेट्स, बट कभी ना कभी तो वो अवेलेबल मतलब हो ही जाते हैं। ट्राई एंड बुकिंग प्रीटी मच इन एडवांस ताकि यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड कि सब कुछ सोल्ड आउट है। Also another thing in terms of the stay, despite them being government stays, ये जो stays हैं इनके बहुत ही well maintained in terms of cleanliness. Don't expect, don't come to Lakshadweep coming with an expectation of like luxury stays and like water villas and stuff like that. वो अभी तक बने नहीं है। वाटर विलास बनने के प्लानिंग में है, बट सिंस थिंग्स हैवंट कम आउट इन द न्यूज़, लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। जो एग्जिस्टिंग स्टेज है वेरी वेरी क्लीन, वेरी वेरी कंफर्टेबल। हर एक रूम में आपको एसी मिलेगा, फैन मिलेगा, सो यू हैव योर बेसिक नेसेसिटीज कवर्ड, एंड आई थिंक दैट इज ग्रेट क्योंकि आप रूम में कितना ही टाइम रहोगे। यू नो व्हेन यू कम टू अ प्लेस लाइक Lakshadweep, to an island, most of your time, like I said, is spent outdoors, exploring the beaches, doing water sports, or just roaming around the island. So the most you would stay in the room is the night to sleep or maybe to bathe or something like that, and it does cover all of your basic. Also जो गोल के साथ ये जो प्लान्स है जो मैं बोल रही हूँ आपको, इसमें मील्स इंक्लूसिव है। तो जो आपका स्टे होगा, जो आप पे करोगे स्टे के लिए, उसी में आपकी तीनों टाइम की ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग का टी, ये सब उसमें कवर्ड होता है। So that brings me to the next point about the cost. Now हर एक आइलैंड पे यहाँ पे अलग कॉस्ट है रहने का। तो मतलब ड्यूरेशन पे कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इतने ही दिन रह सकते हो, बट द ड्यूरेशन रियली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर एबल टू स्पेंड। तो बेसिकली यहाँ पे पर डे चार्ज होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू। मैं कवराती आइलैंड पे रह रही थी, ठीक है। तो कवराती में एक रात रहने का कॉस्ट है 11,500 पर कपल, and all the charges I'm going to tell you are per couple only because per room basis मिलता है, और one room can accommodate 2 people. तो per room charges at Kavarati Island is 11,000 rupees, and इस 11,000 में आपको breakfast, lunch, dinner तीनों मिलेगा, और उसके ऊपर जो भी water activities वगैरह है is separately to be paid for, that is not inclusive of this. अब अगर आप बंगारम में रहना चाहते हो, यू वांट टू विजिट द बंगारम आइलैंड, तो वहाँ पे द पर नाइट कॉस्ट ऑफ स्टेइंग, लाइक पर रूम कॉस्ट इज 18,000. तो 18,000 में 2 of you कैन स्टे विद ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कवर. सो दिस इज बेसिकली टू लेट यू नो कि हर एक आइलैंड का अलग अलग कॉस्ट होता है. तो आप कितने दिन रहो वो फिर आप पे डिपेंडेंट है. अगर आप 18,000 5 दिन भरना चाहते हो, आप 5 दिन भर के रेस्ट, तो आप 1 महीना रहना चाहते हो, आप 1 महीना. सो इट रियली डिपेंड्स कि हाउ मच यू आर एबल टू शेल आउट एंड यू आर एबल टू स्टे. बट अगर ड्यूरेशन मुझसे पूछा जाए तो आई थिंक पर आइलैंड 2 nights and 3 days इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज उतने में आपके वाटर एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगे. और आइलैंड्स बहुत छोटे से है, लाइक दे नॉट वेरी वास्ट एंड स्प्रेड आउट. जहाँ पे मैं रही थी कवराती आइलैंड में, देयर वर प्रीटी मेनी थिंग्स टू डू, बट इट वॉज वेल कवर्ड इन लाइक 2 days. और मैं तो शूट कर रही थी तो आई हैड टू पैक इन लाइक मैक्सिमम थिंग्स इन 2 days. तो भी हो गया. बट अगर एक रिलैक्स्ड आइटिनरी है तो भी लाइक 3 days and 2 nights would be more than enough to stay per island. So that's how you can go ahead and plan your number of days, and that is a little bit of a costing. Now another very important thing that I wanted to cover about Lakshadweep in general is this is regardless of all the islands. यहाँ पे alcohol allowed नहीं है. बंगारम is the only island जहाँ पे आप alcohol पी सकते हो. बाकी कोई भी island पे आपको alcohol बिकता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. Also consumption is restricted, for the simple reason that they want to kind of preserve the island as it is. Along with alcohol come a lot of side effects, like for example basic चीज़ें जैसे कि लोग बियर वगैरह पी के बीच पे फेंक देते हैं, तो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ लाइक गार्बेज. बट अदरवाइज बाहर अल्कोहल नहीं मिलता है, आप पी नहीं सकते, आप खरीद के लेके नहीं आ सकते अपने साथ. इट्स नॉट अलाउड.
इन टर्म्स ऑफ फूड यहाँ पे बिकॉज लक्षद्वीप इज़ वेरी क्लोज टू कोच्चि, तो आपको जो फूड चॉइसेस है वो भी बहुत सिमिलर दिखेंगे। जैसे कि कोची में जो है हमारा साउथ इंडियन फूड होता है, योर यूजुअल राइस, दाल चावल, योर अवियल्स एंड स्टूज एंड पापड्स एंड स्टफ लाइक दैट, चिकन करीज, फिश, तो सी फूड ऑब्वियसली अच्छा ही मिलता है यहाँ पे बिकॉज इट्स एन आइलैंड। तो ऐसी चीज़ें, तो द फूड इज़ वेरी मच सिमिलर टू वॉट यू वुड फाइंड इन केरला, स्पेशली इन कोची। तो उसी तरह का खाना मिलता है जो गवर्नमेंट स्टेज में भी खाना मिलता है, दाल चावल रोटी सब्जी, यू गेट अ डिजर्ट आफ्टर एवरी मील, so all of that. The food is really nice, veg non-veg दोनों options है, and the food is good. Like don't expect to get like a lavish buffet and all of that, like English breakfast or anything like that. Anything over here will not be fancy. Like the stays or the food are not fancy or out of the blue or out of the box like your Maldives or anything, but it's good. It's good to kind of let you stay comfortably and happily, and it's good to feed you the required food that you would require in your day. So much choice isn't available in terms of food. Also बाहर रेस्टोरेंट्स इतने आपको नहीं मिलेंगे, छोटे मोटे सुपरमार्केट्स हर जगह, क्योंकि द लोकल स्टे, तो उनके लिए तो सुपरमार्केट्स है ही हर जगह, बट रेस्टोरेंट्स कैफेज का कल्चर यहाँ पे नहीं है, अनलाइक अ लिटिल बिट इट वाज अनलाइक यू फाइंड इन गोवा एंड स्टफ लाइक दैट। तो despite it being an island and a beach destination, there are no shacks, there's no like cafe culture or anything here, but it's really nice because when you're here you will not really feel the need of that. In terms of things to do in Lakshadweep, it is an island, my friends, and everything you do here, you do in the ocean. So obviously, यहाँ का जो water sports है is one of the best in India, especially scuba diving. अगर आप आपने कभी किया नहीं है, तो पहली बात तो अगर आपने कभी किया नहीं, तो I would highly suggest कि आप एक बार अपने life में scuba dive करो. And this is coming from somebody who who loves the ocean but who's very scared of the ocean because she doesn't know swimming. तो मुझे तो swimming भी नहीं आती, तो भी this has been my second scuba dive after the Andamans. तो I would highly suggest कि आप scuba diving एक बार करो. जो underwater life होती है, उसमें जा पाना and to be amongst that marine life for at least some moments of your life is so priceless. Also Lakshadweep and Andamans are the only two places in India जहाँ पे you get to scuba, the best scuba diving experience in all of India. तो अगर आप बहुत ही यूनिक मरीन लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अलग टाइप की जो फिशेस होती है, जो कोरल्स होते हैं, ये सब अगर आप देखना चाहते हो स्ट्रेट आउटसाइड अ नोटबुक टू इन फ्रंट ऑफ योर आईज, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप स्कूबा डाइव करो. काफ़ी सारे लोकल कंपनीज हैं यहाँ पे. देयर इज़ वन कॉल्ड इज अटोल स्कूबा, जो कवराती में था, जिनके साथ मैंने स्कूबा डाइविंग किया था. तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और स्कूबा डाइविंग अलग अलग तरीके का होता है. देयर इज़ शोर डाइव, देयर इज़ बोट डाइव, और जो ओपन वाटर डाइविंग होता है, तो बेसिकली या तो आप चल के जाते हो और आप पानी के अंदर जाते हो, विच इज़ योर शोर डाइव. मेरा जो था वो इन वाटर किटिंग था, विच इज़ बेसिकली आई गॉट इनटू द वाटर, और पानी में जाके मुझे फिर गेयर अप किया था विद माई BCD एंड ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ पे वैसे ही स्कूबा डाइविंग होता है जहाँ जैसे हर जगह पे होता है. एक मतलब आपको पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे ऑफ द डिफरेंट सिग्नल्स, अंडर वाटर सिग्नल्स जो होते हैं, जो जब आप अपने डाइवर के साथ जाओगे तो आपको क्या सिग्नल्स यूज़ करने हैं, अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आपको बाहर कैसे निकलना है, इफ़ यू फीलिंग फाइन, इफ़ यू फीलिंग ओके, ही कीप्स आस्किंग यू मिड वाटर ऑल्सो इफ़ यू आर ओके, सो हाउ टू रिप्लाई टू दैट, ऑल ऑफ दैट. इक्वलाइज कैसे करना है, जैसे हम पानी में डिसेंड करते हैं, जैसे जैसे हम और डीपर जाते हैं, तो पानी का प्रेशर बढ़ते जाता है, पानी का प्रेशर काफ़ी सारा चेंज होता है, जस्ट लाइक इट डज व्हेन यू आर इन द फ्लाइट एंड योर ईयर्स माइट पॉप. सो हाउ टू काइंड ऑफ इक्वलाइज दैट एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट टू सी सम ऑफ द बेस्ट अंडरवाटर लाइफ दैट यू कैन एवर थिंक ऑफ इन योर एंटायर लाइफ. सो you can do scuba diving. और scuba diving का जो cost है, there is no fixed cost, क्योंकि it really depends on what you're doing. So basically it starts from discover scuba dive, जो DSD course जिसे कहते हैं. तो वो अगर आप करो तो that would be somewhere between 4,500 to 3,000 rupees. And this also again depends, एक bracket में आपको इसलिए बता रही हूँ, not a fixed price, क्योंकि आप कितने डीप आप कर रहे हो. मतलब एक छोटा सा डाइव होता है जो सिर्फ एक इट टेक्स यू लाइक 12 फीट वाला डाइव होता है, फिर कुछ होते हैं जो 30 फीट वाले डाइव्स होते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन
which dive site you're going to, how deep you're going to be diving, and what course of diving you're going to take. तो ये DST हो गया जो starter है. उसके बाद आप कर सकते हो advanced diving. उसके बाद आप कर सकते हो to be the instructor. तो basically कुछ dives के बाद आप एक certification course भी कर सकते हो. तो मेरे 2 dives अभी तक life में हो चुके. तो आज अगर मैंने यहाँ आगाती में तीसरा dive किया तो मुझे certificate मिल सकता है. I can be a certified diver. So let's see अगर time मिला तो I might just do that. And yeah, so scuba diving is one of the things you can do in Lakshadweep. Other than that, other water activities like you can snorkel, great corals, great amazing little fishes that you can see while you snorkel. And you can also do other things like standing paddle boarding. You can do surfing, you can do kayaking. Kayaking is the best to do क्योंकि पानी इतना clear और beautiful है. अगर आपने फिलीपाइंस की कुछ photos देखे होंगे जहाँ वो एकदम crystal clear water होता है, where you can literally see the bed of the sea. That's the kind of water you'll get over here. तो उसके ऊपर kayaking करना is like a crazy experience. And yeah, so water activities form a major part of things to do in Lakshadweep. Other than that, you can go island touring. अगर आप GoL Travels के साथ आ रहे हो तो इनके ही लोग आपको अपने साथ लेके जाएंगे to kind of show you how the locals live over here, क्या करते हैं, जो local fishermen होते हैं ये fishes कैसे पकड़ते हैं, all of that. And yes, another thing is to witness a sunrise and a sunset at the beaches over here. It's mind blowing. If you've seen my first 2 episodes and all these things that I'm saying, आपने already देख ली होगी, and I don't have to vouch more for it. So yeah, these are some of the things that you can do at the Lakshadweep island. So I hope I have tried and covered every base and everything that you need to keep in mind while coming to Lakshadweep. If not, then you will find little more information जो शायद मैं यहाँ बोलना भूल गई, जो मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखा है. तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो का भी प्लीज़ डिस्क्रिप्शन रीड करना, उसे इग्नोर मत करो. द डिस्क्रिप्शन इज़ पुट फॉर अ रीज़न. उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स होते हैं वीडियो के वो सारे होते हैं. सो प्लीज़ गो चेक दैट आउट. अदर देन दैट, इफ़ यू स्टिल हैव any more questions, you guys know my Instagram handle. You can always DM me to check on any information you want from the Lakshadweep, or you can always comment on this video or any of the first 2 videos and leave your comments so that I can quickly, I'm always very quick to reply to your comments, and I really love when you guys ask me questions that you really want to know about. So if you have any questions about Lakshadweep, how to travel, what to do, anything beyond what I have spoken over here, then please feel free to drop them in the comments below. And subscribe to Talkin Travel if you still haven't. Get your friends to subscribe. यार एक friends trip plan कर ही लो. Family friends trip और कोई नहीं मिला तो solo trip तो कर ही सकते हो मेरी तरह. You can come to the Lakshadweep and you can get the best of this world that is so unexplored. That's like these virgin islands, untouched islands. It's so beautiful. I highly urge that you guys come to Lakshadweep and experience what I got to experience. So I will see you guys soon from another destination. Until then, goodbye.